Active Directory service domain service to store the information about the objects on the network and make the things and make this information available to the user over what? Network administrator. ADDS uses domain controller. Okay. So before that, what we have discussed in this so far, जो भी चीज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, उसमें क्या किया कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है आपके यूजर्स और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को. एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजेस अ domain controller permitted resource model. It will generate the permissions, it will generate a permit that particular user is authentic, where he is trying to log in, it is authentic device or not. We'll discuss about the domain controller and anywhere on the network through a single login process. इस point को हम लोग domain controller discuss करें. ठीक है. So let's first understand what is a single login process. ये single login process क्या होता है? Single login process means you are only having one username and password. Only one point. आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे आप यूजर नेम इंसर्ट करोगे और पासवर्ड इंसर्ट करोगे. दैट्स इट. मल्टी लॉगिन प्रोसेस कॉल्ड एज वेयर यू आर हैविंग द ऑप्शन कि यू कैन क्रिएट योर अकाउंट, यू कैन log in with your Gmail account, you can log in with your Outlook account, you can log in with any set of account. आप किसी भी अपने अकाउंट के साथ लॉग इन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मल्टी लॉगिन प्रोसेस. उसको हम लोग कहते हैं मल्टी लॉगिन प्रोसेस. टू लॉग इन वाया यूजर नेम एंड पासवर्ड, जहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो भी यूजर नेम है और जो भी पासवर्ड है आपको उसी से लॉग इन करना है. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. ओके. नाउ व्हाट इज डोमेन कंट्रोल? डोमेन कंट्रोल क्या होता है? We call it DC. हम लोग इसको DC कहते हैं. So domain controller says it is responsible for this is a server which is responsible for authenticate request verifies user कहने का सेंस क्या? मतलब कहने का सेंस क्या? Now let's understand this scenario. अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझिए. You have one server. ये आपका सर्वर है. So this is your DC called as. Now DC is a domain controller, so it will hold a name. Suppose HCL.com. Inside a DC you will have ADDS and inside a DC you are going to have NOS, and inside NOS you are going to have your DC ADDS. NOS के अंदर आपको ADDS मिलेगा. Now we establish the connectivity via switch. हम यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रहे हैं स्विच की हेल्प से. Okay. And here I am. ठीक है. ये मेरे पास है. They are connected over here. They are connected over here. Now, they all belong to HCL.com. ये सारे HCL.com पे belong करते हैं. When the user tried to log in, जब user log in करता है try करने के लिए, so when it will try to log in, so it will first get authenticated via DC.
पहले ये डीसी ऑथेंटिकेट करेगा कि दिस पीसी बिलोंग टू hcl.com और नॉट। ये पीसी hcl.com से बिलोंग करता है या नहीं। इफ इट यस देन इट विल रेज अ परमिट। तब ये परमिट रेज करेगा कि ओके नाउ यू कैन गो थ्रू द एडीडीएस बाय एनओएस। अब एनओएस के अंदर जो एडीडीएस है अब आप वहां से जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकते हो। फ्रॉम देयर यू कैन गेट योरसेल्फ ऑथेंटिकेटेड। दैट इज कॉल्ड एज डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज डीसी। अंडरस्टूड गाइस? जस्ट अ सेकंड। सर हेलो सर। This is called as domain controller. So domain controller means it is responsible for handling all the names and all. ये जो डोमेन कंट्रोलर है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके सारे नाम और सारे आपके हार्डवेयर सेक्शंस को मैनेज करने के लिए कि दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर सेक्शन बिलोंग्स टू मी और नॉट। ये जो हार्डवेयर सेक्शन है क्या वो हमसे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। once it get authenticated कि okay it belongs to me, ये हमसे बिलोंग करता है, it will give you only one login process that called single login process that I explained। ये सिर्फ आपको एक सिंगल लॉगिन प्रोसेस देगा जहां पे आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे। you will enter your user name and password. after that it will send you to the ADDS। इसके बाद ये आपको ADDS को भेजेगा and ADDS will authenticate yes this is the authentic user or अब ये बताएगा कि ये सही में ऑथेंटिक यूजर है या नहीं। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन कंट्रोल। इसको कहते हैं डोमेन कंट्रोल। हेलो सर। सर हेलो सर। जी बताइए। हाँ सर, ये इसको सर लॉगिन यही डेस्कटॉप से कर सकती हैं, कहीं और से नहीं होगा ना सर? नहीं। ओके सर। सर HCL में पर्टिकुलर जो कनेक्ट है डेस्कटॉप उनसे ही ओपन लॉगिन होगा? हाँ। ओके सर। डीसी यही तो ऑथेंटिकेट कर रहा है ना। डीसी इसी चीज को तो ऑथेंटिकेट कर रहा है। ओके सर। अगर हम अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जाते हैं, इन दैट पर्सनल लैपटॉप इफ योर लैपटॉप इज कनेक्टेड इन द वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट, अगर आप वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में हैं तो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग ऑल द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड। आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो कहां से ऑथेंटिकेट होगा? वाया सिस्टम। ओके सर। आपका जो हार्ड डिस्क है सारा चीज वहीं तो स्टोर है ना। बट व्हेन वी से कि यू आर इन द डोमेन तो एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड ओवर द डीसी एंड एडीडीएस। सारी चीजें डीसी और एडीडीएस पे स्टोर हो रही हैं। फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू गेट ऑथेंटिकेटेड। अब आप वहां से ऑथेंटिकेट हो। सर कंपनियों में यहीं से ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही स्टार्ट होते हैं सर, HCL जैसे कंपनियों में ऐसे ही होता है सर? हाँ जी ऐसे ही होता है। ओके ओके सर। आप किसी भी पैरामीटर पे चले जाओ, you visit any set of the company, you will find कि there even a printer भी आपका डोमेन में बिलोंग करता है। that printer belongs to the domain as well. This is what it is. Now we have network operating system। इसके बाद हमारे पास आता है network operating system। So NOS। सर समझ में आ गया। NOS stands for नेटवर्क network ऑपरेटिंग सिस्टम। operating system called as NOS। ठीक है। Now over here, what is NOS? So ढका खाना है तो इसमें निकलूंगा यार। Bit not written। हाँ जी।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ अस टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए हेल्प करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू कैरी ओवर. मतलब इन द सेंस इफ आई से कि द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सेज कि ओके हाउ यू वांट दैट पर्टिकुलर नेटवर्क टू वर्क फॉर यू. आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क आपके लिए काम करे. You want to provide them the service, so we will host the website. So hosting of the website will carry another set of network. जो hosting of the website है उसका जो network होगा वो अलग तरीके से configure होगा. So according to that, network operating system help us to do the steps कि what kind of the roles and responsibilities, what kind of the features you want to do it over here. आप किस तरीके के features को यहाँ पे use करना चाह रहे हैं. You want to use it for getting your user authenticated. आप चाह रहे हैं कि आपका user यहाँ पे authenticate हो and all. So this is all the things are done in the NOS. ये सारी चीजें NOS पे होती हैं. So we call NOS as an server operating system as well. हम लोग NOS को server operating system भी कहते हैं. And the example is in front of you. This is what it called as. Understood? समझ में आया? Hindi English both? Yes sir. Yes. Any set of the query? सर डोमेन में रखने के लिए इसलिए लैपटॉप अलग से देते हैं सर. जी. सर कोई भी हाँ भाई सही है. हाँ. कंपनी है तो वो आपको थोड़ी बोले कि आप अपना पर्सनल पीसी लेके आओ, हम कनेक्ट करेंगे. भैया उसका काम है, उसका डेटा है, सारी चीजें उसकी है. तो वही बोलेगी ना कि हम आपको दे रहे हैं, हम कॉन्फ़िगर करके देंगे आपको. आपसे थोड़ी मंगाएगी वो. ठीक है. तो सारे कंपनीज का डेटा उनके पास होता है. अगर ऐसा होता कि हर एक कंपनी बोले कि अच्छा आप मेरे यहाँ एम्प्लॉय कर रहे हो, आप अपना लैपटॉप लेके आओ, तो पता चलता कि हर कंपनी का डेटा हर किसी के पास है. डेटा इज इम्पोर्टेंट. डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है. ओके. सो आई वांट टू नो कि टिल NOS, AD, ADDS, DC and NOS. भाई एकदम सही पकड़ा तूने. Because these four things are very 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 important. Active Directory domain service, domain controller, network operating system. Is this understood by everyone? ये चारों चीजें सबको समझ में आई? यस Yes sir. Yes sir. Yes sir. Any set of the single point of confusion. किसी को भी single point का confusion है यहाँ पे? No? Very well. Then let's move on. If the thing is understood, then you can easily understand this image. अगर सारी चीजें समझ में आ गई है, तो आप काफी easily इस image को समझ सकते हैं. Yes sir. Here you can see you have domain controller. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक domain controller है. Inside a domain controller you have edit NOS code as 2016. आपका DC के अंदर एक 2016 server है. Okay. And inside a server you have Active Directory. इस server के अंदर Active Directory domain service चल रहा है. And according to that you can set up the multiple servers. You can set up the deployment services. You can provide the service to the client. यहाँ पे आप multiple DC के अंदर भी, एक server के अंदर भी आप multiple servers को बना सकते हैं. This is called as FTP. ये FTP server बन गया, ये deployment server बन गया, ये clients सारे हो गए जो client आपके use कर रहे हैं. So this is the thing. Okay. This is the thing that can be used over. So is this image is understood? ये image समझ में आया? Right. Very well. Now let's have the few advantage and disadvantage. कुछ advantage और disadvantage देख लेते हैं domain controller के बारे में. That is an important one.
पढ़ते दिखा रहे हैं हम सकते हैं। सर यस, यहाँ पे पासवर्ड सेम आर ऑल कंप्यूटर, यहाँ पे पासवर्ड कैसे एक ही कंप्यूटर का मतलब पूरा सेम ही रहेगा सर? डोमेन एडवांटेज में सर कहाँ लिखा है पासवर्ड? मतलब सर मैं गूगल पे देखा था सर, वहाँ पे गूगल पे अगर आप देख रहे हैं एडवांटेजेस में, तो वो जो टर्म है वहाँ पे लिखा होगा कि किसका पासवर्ड सेम हो फॉर ऑल कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ डोमेन का सर, एडवांटेजेस ऑफ डोमेन में आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एक होगा हर एक कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक जगह से रेगुलेट हो रही है। समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि जो भी यूजर बनेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो सारा सर्वर पे होगा, वो इस पे कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें यहाँ पे कुछ नहीं होंगी। नो सिंगल यूजर इज गोइंग टू रिलाई ऑन दिस सिस्टम, इन दिस हार्डवेयर सिस्टम, not a single one, where everything is going to rely on this one. सारी चीजें कहाँ रिलाई होंगी? यहाँ पे। So what the administrator is going to be on the server, जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही सबका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। समझे बात को? यस नहीं समझ में आया? जी समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। ये चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिकल में इन चीजों को देखेंगे। जब हम सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जब हम किसी भी नॉर्मल क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे सर्वर से, तब आप चीजों को देखिए कि एक ही एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो द डिसएडवांटेज इज नोटेड डाउन बाय एवरीवन। डिसएडवांटेज सबने नोट डाउन कर लिया? नो सर। क्या करना है यार, क्या कर रहा है यार? हो गया सर, हो गया। वेरी नाइस।
noted guys? Note down हो गया? Yes sir. Noted. Very good. Yes sir. Over here. So advantages and disadvantages of domain. So it simplifies the administrative workloads. तो simplify करता है आपके administrative workloads को means while sitting at one place, the administrator can manage every single computer and he can pass the things what the thing need to be done by whom. एक जगह से बैठे बैठे वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकता है और चीजों को पास भी कर सकता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम किस क्लाइंट के साथ उसको क्या चाहिए. ओके, इट मैक्सिमाइज द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी नेटवर्क. पीसी कैन कनेक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन. कोई भी आउटसाइडर पीसी कनेक्ट नहीं हो सकता है. द थिंग नीड टू बी गेट डिफाइंड. चीजें डिफाइन होनी चाहिए. सेंट्रलाइज कंप्यूटर कंट्रोल ओवर द यूजर सेटिंग्स. सारी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से हैं तो यूजर सेटिंग्स के ऊपर सारे कवर अप होती हैं. ओके, सेंट्रलाइज फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट एवरीथिंग इज गेटिंग आइडेंटिफाइड. एक जगह से सारी चीजें आइडेंटिफाई हो रही है. It increase the collaborative potential with the domain. मतलब we can establish the connectivity with the multiple domains as well as we can create the parent, child, root domain as well. जहाँ पे हमारे पास अलग अलग डोमेन के साथ जो कनेक्टिविटी का पावर है वो बढ़ता है और साथ ही साथ एक रिसोर्स के अंदर एक डोमेन के अंदर हम लोग बहुत सारे चाइल्ड डोमेन, रूट डोमेन, पेरेंट डोमेन, ट्री डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द एडवांटेजेस इज. ये एडवांटेजेस के हैं. If I talk about disadvantages, अगर हम disadvantages के बारे में बात करें, so domain controller needs additional security mechanism and infrastructure. Absolutely, it maximizes security, but it needs some kind of the security mechanism and infrastructure as well, just for over the network. Like someone is validating themselves from the home network. कोई अपने घर के नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, VPN चाहिए, हमें मल्टीपल सर्वर्स चाहिए दैट इज गोइंग टू ऑथेंटिकेट द VPN itself. VPN को कोई ऑथेंटिकेट करे फिर वहां से चीजें रेगुलेट हो. दैट इज द इम्पोर्टेंट. Since domain controller is responsible for user authentication, its failure will cause network damage. आपके यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए डोमेन कंट्रोलर ही रिस्पॉन्सिबल है. जब तक वो टोकन जनरेट करेगा नहीं तब तक DDoS एक्टिवेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा नहीं. Once it is not going to generate the token, so till then your active directory is not going to authenticate the user. So if domain controller goes down, अगर domain controller fail होता है तो मेरा पूरा नेटवर्क फेल होगा. My whole network is on the fail state. Okay. जो failure of DC है वो आपके पूरे नेटवर्क डैमेज का कॉज हो सकता है in the cyber attack. Cyber attack में अगर DC compromise हुआ, if the hacker is able to hack the domain controller, then there is no another option. Your all the system got hacked. अगर डोमेन कंट्रोलर हैक हुआ तो आपका सारा सिस्टम हैक हो जाएगा. नो अनदर ऑप्शन. सो कंप्लीट लॉस. सो फॉर दैट थिंग पूरा नेटवर्क आपका डोमेन कंट्रोलर पे डिपेंड करता है. अगर उसमें जरा सा भी डाउन टाइम आए तो पूरा नेटवर्क वेल इन दैट केस द हिट टुवर्ड्स द नेटवर्क. From another point, validating from some other single server. जो ये हर एक चीजें एक सिंगल सर्वर से ना हो, अलग अलग तरीके से हो. That is what in the disadvantage is. So these are the advantage and disadvantages of the domain. Is this understood, Daisy? Yes sir. Any set of the query? No one? DNS. अब हम लोग DNS के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So the DNS stands for domain name server is
for accomplishing this task divided into two parts. First one known as forward DNS. पहला होता है आपका forward DNS. Convert into IP. Reverse DNS stands for convert IP. Okay. This ये responsibility होती है. So DNS we can say कि DNS is a directory, DNS is a term, DNS is a kind of table which is having the location, which is having the name of every single domain, or which is responsible for locating the IP for a specific domain, or it is a kind of the table which has the IP address of every single domain. ये एक टेबल है, एक डायरेक्टरी है, एक लोकेटर है, that is the thing. जो किसी भी नेम को आप सर्च करोगे तो वो किस आईपी के ऊपर जाना चाहिए. So whatever the name you are searching for, where it need to be get located, where you want to go, it is a responsibility of DNS. ये आपके DNS की responsibility है. Now, if I say कि you all need to remember this name, आप सबको ये चीज याद रखने की जरूरत है. So you can go for 2, 3, 4, 5. आप 5 तक easily चीजों को याद कर पाओगे. After 5, you will face difficulty. इन 5 के बाद आप difficult face करोगे. Why? Because these are the IP, these are the numbers. So numbers is quite difficult for a human person to remember or to make the things accessible. Now in this internet world, we are having the numbers of website, and if we try to remember the IP of each and every website, do you think it is possible for anyone? हमारे इंटरनेट वर्ल्ड में इतने सारे नंबर हैं, सॉरी इतने सारे आईपीस हैं, एड्रेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं. अब हर एक let's switch the you can remember home is कर लो. ये गिरा है बे, मैं तो ढूंढते ही ढूंढ रहा यहाँ देख क्यों है कौन ठोकरा है पगला आदमी. In progress. At every time you want to call someone, अगर कभी भी आप किसी को कॉल करते हैं, you just type the name and press the call button. आप सिर्फ नेम टाइप करते हैं और कॉल बटन प्रेस करते हैं. बैकएंड it goes on the number. बैकएंड में क्या हो रहा है, वो नंबर पे कॉल जा रहा है, ना कि उस पर्टिकुलर नाम पे. Who is responsible for DNS? इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? DNS, by converting the name to IP and again IP. This is what it calls. This is it. Till over here is understood. यहाँ तक सबको समझ में आया DNS? Sir, I understand better. Okay. Now, what it converts? ये क्या convert करता है? Name. कौन सा name? Which kind of name it converts? It converts domain. ये convert करता है domain. Means unique name.
we can say that it converts FQDN. ये FQDN को convert करता है. Now what is FQDN? FQDN stands for fully qualified domain. ये क्या काम करता है? Fully qualified domain name को IP में और IP को name में convert करता है. What is your fully qualified domain name? www.google.com/whatever the thing is. www.evision.com/faculty. faculty.evision.com/test. test/test.evision.com. www.evision.com/test. These are it. ये चीजें क्या है? आपके FQDN. What is this? These are your FQDNs. So when we convert them to IP2, हम इन चीजों को IP से नेम और नेम से IP में convert करते हैं. So not only the name, we convert FQDN. So the DNS works over the FQDN. DNS जो है वो FQDN पे काम करता है. This is called as forward. ये forward होगा name to IP और ये होगा reverse. हमने दुआ लाए तुम्हारे को भी पास रखने के. This is called as. This is the thing called inside the DNS. So DNS always works over the FQDN and the FQDN is quite similar to the URL. FQDN आपको कुछ similar लगेगा आपको URL के ऊपर, but the domain says the FQDN says it is not going to have any set of the protocol. It is only going to have the exact location for where you are pointing. ये exact location होगा कि आप किस जगह पे क्या point out करना चाहते हैं. That is what it called. So the DNS works on that point. DNS आपका इन चीजों के ऊपर काम. Understood guys? समझ में आया? So Yeah, sir. अब हम वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन और VMware के वर्चुअल मशीन. Before going on that point, I want to give you the things. You all have to download the Windows server. So the thing is those who have 4 GB RAM, they will download Windows Server 2008 or 16. Okay. Now, those who have 8 GB or 8 GB plus actual RAM, I'm talking about actual RAM. They will download
Windows 18. Windows Server 16 और 19, Oh, वो मैं कोई भी 19 डाउनलोड का कर रखता सकते हैं, 16 और 19। ओके, ठीक है, क्लियर, हूँ। ओके सर। नोट इट डाउन नाउ। यस सर। फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू डाउनलोड ऑल दोस थिंग्स, आप ये सारी चीजें डाउनलोड कहाँ से करेंगे? सो लेट मी गिव यू द लिंक एज वेल। लेट मी ओपन द क्रोम। Okay, I am dropping this file as well. हम इस फाइल को भी ड्रॉप कर दे रहे एंड आई विल ड्रॉप द लिंक एज वेल। हम ये लिंक भी ड्रॉप कर देंगे। over here there you go. So this is the 19, this is called as 12R2. So over here just a second, I just mentioned 8, remove mark it as a 12, इसको 12 mark किया। 8 अभी नहीं मिलेगा लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। मार्क इट 12, 2012 and 16, whatever. Okay, make that correction over here. Quite well. Now coming to this portion. So this is how you are going to have that all the links. इस तरीके से आप जो भी link open करेंगे, you will get the things over. Scroll down, you will find lots of the language. Scroll करेंगे आपको languages मिलेंगे. You all have to download the ISO. सब ISO फाइल करना डाउनलोड करना है. So just need to click over here, the download will get started. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए. Okay, there is no queries at all. यहाँ पे कोई problem है. Just click over here, the thing will be get downloaded. Same as with 12R2, this one. Same as with 16, this one. Everything you need to download about the ISO file. जो भी सर्वर आप डाउनलोड करेंगे उसके ISO फाइल को आपको डाउनलोड करना है. Now, here you have Windows Server 2022, 19, 16, 12. यहाँ पे आपको सारा मिल जाए. ठीक है? These are things that you have. This is what you link and this is how you need to download. और इस तरीके से आपका लिंक मिल गया आपको और इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है. Okay, this is the thing that we have. Sir, we have to download both the ISO file and Windows Server 2016 file. Can you elaborate me the difference between the Windows Server and the ISO file? Swaroop, Sir, can you elaborate me the difference between the Windows Server and the ISO file? I think it would be same, sir. Then, what is the difference between both of them? You showed in another option, so I asked like this, sir. We have to download this or Another option I just showed you कि this is your 2016, here is your 12R2, here is your 1219. If someone is only able to copy the 2016 link, you can go to the Windows Server.
yes, you can have the download. दो तरीके हैं, आप यहाँ से कहीं से भी आप ओपन करके डाउनलोड कर लो, no problem at all. I shared the link for your convenience. मैंने यहाँ पे convenience के लिए link भी share कर दिया, where you have to just click over the 64 bit. जहाँ पे आपको सिर्फ 64 bit पे click करना है, nothing will be get downloaded. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And according to the RAM capacity, the actual RAM capacity, you have to download the things. आपके अपने RAM capacity के हिसाब से चीजों को डाउनलोड करना है. And I have written the thing as well. मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है. Okay, sir. Okay. Now, let's move towards the installation part. अब इसके installation section के ऊपर move कर. Very easy, guys. Create a virtual machine of Windows Server. अब Windows Server का virtual machine बनाए. Okay. Click over the create a new virtual machine. Next. This is the page from where I can select कि which virtual machine I am looking for. यहाँ पे हम select कर सकते हैं कि हम किस virtual machine को देखते हैं. So I am looking for Windows and the version is going to be the server. हम यहाँ पे Microsoft Windows में है और version जो होने वाला है वो मेरा server होने वाला है. So according to my, I am having a 12 GB RAM. So I have downloaded the 19. मेरे पास 12 GB RAM है, इसलिए मैंने server 19 को download करके रखा. According to you, whatever the version suits you, you can download. जो भी वर्जन आपको सूट करता है, जो भी वर्जन आपके एक्चुअल रैम के अकॉर्डिंग है, आप उस चीज को डाउनलोड कर लेना. Okay. And select the version over here. Like someone has downloaded 12, so they are going to select 12. जो लोग 12 पे डाउनलोड करेंगे, वो 12 select करेंगे. Those who will download 16, they will select 16. Those who have downloaded 19, they will select 19. ठीक है? So I am having the 19 over here. मेरे पास 19 है. Click over. Next name. I am giving the name Win server. Before that, I am going to give the 12:30 to 2:30. इससे पहले हम यहाँ पे बैच का टाइम दे दिए. That's all. Click on next. I'm giving the disk size 20 GB. हम यहाँ पे disk size दे रहे हैं 20 GB. Click on next. Finish. Virtual machine for server created. Server के लिए virtual machine मेरा बन गया. Very easy. Edit virtual machine settings. I will provide the 4 GB RAM. I will go for the CD/DVD, use ISO, browse. My ISO file is in downloads. Over here, open. Okay, thing is done. Click on the power on. Same process as you have installed the Windows 10. Same process. Same thing. Just the difference is on that point you have installed 10. Here you are installing server. उस point में आपने server की Windows किया था. यहाँ पे आप server कर रहे हैं. That is the thing. Now, are you able to identify this interface with someone? Like, are you able to find this interface similar to something? आपका ये interface किसी से similar है? Anyone? Yes sir, Windows जो install करी थी उसके जैसा ही है. ठीक है. So the interface of server and the client is same. Why? Due to their update version. इनके update versions के लिए. Both the update version is running on the H series. जो भी client और server का जो update version है, वो इसीलिए सबका same interface है. If we will download the 12, अगर आप 12 download करें
12 जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो Windows 8 से is going to have some amount related to the 11, but probably 2022 is also going to have the 10 interface. 2022 को भी 10 interface मिलेगा, लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद after the some updates it is going to have on 11. कुछ अपडेट्स के बाद वो 11 के ऊपर अपडेट हो जाएगा. So the interfaces are going to vary according to the year and according to the versions update. ठीक है, जो 1619 है वो उसी ईयर में लॉन्च हुआ है जिस ईयर में आपका विंडोज 10 रनिंग में था. The 16 and 19 got launched in particular year when your Windows 10 got launched. So that is why they all have the same interface version की वजह से, due to their update versions as well. Understood guys? समझ में आया? Okay. Yes. So now, click on the next. Same guys. Just did how we have installed the things. We have to do the same thing. Next. Install now. Mama. Now over here. Here you are having 4 options. Standard evaluation, data center, standard evaluation, desktop experience, data center evaluation, desktop experience. Now let's understand this portion. Standard evaluation. पहले standard evaluation को समझते हैं. Standard evaluation is used for small businesses. Data center is used for large businesses. Here you have unlimited license. Here you can create here you can create 5 to 6 virtual machine and 2 Hyper-V with their activations. इनके activations के according. Here you will also get the unlimited users, unlimited license, unlimited virtual machines and 2 Hyper-V. ठीक है? Here you are going to have 100 plus number of users. Here you are going to have 100 users. Okay. This is it. Security levels. Here you will get the advanced security level according to the virtual machines and the users as well. यहाँ पे आपको advanced level of security मिलेगा virtual machines और users के according. Here you will have the limited. We are having the 15 or 16 number of resources, 16 and 17 numbers of differences between the standard and the standard is used for small businesses. Standard जब यूज होगा तो स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होगा और इन वर्ष होने में कहीं मजा मजा आ गया. स्टैंडर्ड मतलब दो बिजनेस की डाटा सेंटर लो क्लियर वो स्मॉल के लिए पालूंगा लालूंगा गल करके गल करके प्रोग्रेस. ये या तो पावरशेल देगा या तो कमांड प्रॉम्प्ट देगा. इन दोनों को यूज करके आप सर्वर को मैनेज करेंगे. और यूजिंग दिस टू थिंग्स यू आर गोइंग टू मैनेज द सर्वर. और आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हैव विंडोज एडमिन सेंटर वेयर यू विल गेट द ग्राफिकल यूजर.
कोई आपको नहीं देंगे जहाँ पे आप मैनेज कर सकते। So in the description you can have a look. Recommended, this option omits most of the Windows graphical environment. Manage a command prompt, add a PowerShell, or remotely with admin center. After that we have desktop experience. इसके बाद हमारे पास desktop experience है. So in the desktop experience you will आपके पास GUI mode होगा. So this option install the full Windows graphical environment consuming extra data drive space. It can be useful if you want to use the Windows desktop or have an app that works. अगर आपको पूरे graphical environment में अगर use करना है सब GUI पे चाहिए. This is what it is. So what you all need to do, you all have the Windows Server Data Center evaluation, whatever the version you have, 12, 16 or 19, with desktop experience. This is the thing that you all have to select. ये चीजें हैं जो हर किसी को select करनी. Okay. Noted. Note down कर लिया. I will click over here and over here click on the next. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कह सकूं न मैं शायद अमने क्या कह पारे. Progress. If there is no any queries, then leave the session till over here. Tomorrow we are going to deploy the things. कल हम लोग डिप्लॉय करेंगे and we will discuss rest key points as well. हम लोग कुछ key points को भी discuss करेंगे. Okay. So thank you so much everyone for joining the session. Give it to us sometime. Bye bye. Take care. Have a good day. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.